इमेजिन करो आज आपके बैंक अकाउंट में अचानक से 2 लाख रुपए आ जाएं और अगले ही दिन आपकी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए। साउंड्स लाइक अ मिरेकल, राइट? बट यू रियली बिलीव इन मिरेकल्स? वेल, मैं तो करती हूँ और आपको भी हो जाएगा जब आप हमारे आज के गेस्ट से मिलोगे। इसलिए आज के ग्रोथ शो पे हम बात करेंगे अदिति और सौरभ से, जो एफएमएस दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं एंड हीरो कैंपस चैलेंज जीतकर 2 लाख का चेक और पीपीआई अपने नाम कर चुके हैं। अदिति से हम पहले भी बजाज एटम सीईओ चैलेंज वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ऐसा क्या है जो इन स्टूडेंट्स को बार बार इन नेशनल कॉम्पिटिशन्स का विनर बना रहा है? लेट्स चेक इट आउट। Hi Aditi, hi Saurav. I'm glad to have you on the Growth Show. आज हम डिस्कस करेंगे आपकी विनिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो अपने हीरो कैंपस में लाइक जीती थी और आपने क्या क्या विनिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी उस कंपटीशन को जीतने के लिए। बिफोर गोइंग हेड, आई वांट बोथ ऑफ यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Aditi, please go ahead, like ladies first. Hi Aditi, thank you for having me here. So, I've been born and brought up in Delhi. I did BTech in Mechanical and Automation Engineering from Delhi itself. I'm currently pursuing an MBA from FMS Delhi, and I'm majoring in strategy, operations, and marketing. Um, I love to dance and cook. Saurav was my senior at FMS, and I teamed up with him and Abhishek for this campus challenge. Oh wow. Saurav, please go ahead. So hi everyone, I'm Saurav. I'm from Punjab, born and brought up there. Graduated from FMS in 2022 and currently working in ITC for about 8 or 9 months in Nagpur here. Had a great journey here and had a lot to learn in FMS. Aditi, one of my teammates, had a lot of competitions together, a lot of success, a lot of ups and downs, but overall has been a great journey. वाओ, एंड आई थिंक अदिति तो हमारे शो पे सेकंड टाइम आई है। शी इज रियली प्रो एट विनिंग कॉम्पिटिशन। डेयर टू कम्पीट करके देयर इज अ वेबसाइट, वहां पे आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज योर रैंकिंग, यू टोल्ड ना एक बार अदिति। Yeah, I was second in women and 16 all over India. Yeah, like so it's so difficult to rank, so rank so high. So Aditi के साथ तो आप make sure connect कर लेना LinkedIn पे. She will tell you a lot of secret strategies on how to win a lot of competitions. So yeah, let's talk about the Hero Campus, जिसके लिए हमने podcast करें। ये Hero Campus Challenge है क्या और किस किस के लिए open है? So, Hero Campus Challenge is a competition organized by Hero Motocorp, and basically they have challenges for both E schools that are engineering colleges and B schools that are business schools or MBA colleges. So you can participate in the track that you are eligible for. और इसमें भी similar to Bajaj, like we discussed, there are problem statements from each track. So engineering के 4 problem statements होंगे and business के 4 problem statements होंगे. You can pick any one problem statement and present your solution. I think Saurav would be able to better tell you about the stages and what all is there. So इसमें 4 stages होते हैं. So first is the quiz round, where basically you just sit down with your teammates and go through the questions that are coming one by one, and you can readily solve it on the moment. So there's no preparation itself for this quiz round. So you just sit down with your teammates and get it done. Then next comes the one-pager round, which is the first round where you actually have to sit down with your teammates and prepare a solution to one of the problem statements they're going to be selecting. So this is the basic solution that you're presenting to the hero team, where they'll judge you based on the one slider PPT that you're going to be presenting. You don't actually get to present that PPT. You just have to mail that PPT to them, and they'll just look at the solution that you've given, and based on that, they select teams for the next round, which is the semi-final round or the virtual presentation that we had. So there you need to have a more detailed solution, probably 8 to 9 slides, give some working on how you are coming to the solutions, how they're going to be impactful, do some financial analysis as well, along with the strategic part of it. And that you get to actually present to the hero team. So there will be some judges that will be judging you based on the presentation, have a Q&A round, and according to that, the final teams are selected. So this happens both for the E track and the B track. And then in the finale, you have, I think, 5 teams each, 5 from the B track, 5 from the E track, and each team gives their final solution. And based on that, 2 teams are just first and second from B track and E track separately. So the first team gets around 2 lakh and PPI,
and the second team gets, if I'm not wrong, 1 lakh and PP as well. So there are two winners, both from the E track and the B track, and two runner-ups, one from the B track and one from the E track. ओके वाओ सो सबसे पहले ये क्विज राउंड हुआ, फिर एक स्लाइडर की पीपीटी सबमिट करनी होती है एंड देन फिर हमें डिटेल में पीपीटी सबमिट करनी होती है। उसके बाद जो सीनियर लीडर्स होते हैं हीरो के, वो आपको सजेशन देंगे एंड देन आप एक फाइनल पीपीटी सबमिट करते हो और उसके बाद लाइक प्रेजेंट भी करते हो। उसके बाद डिसीजन होता है कि हु इज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन। सो क्विज में आई थिंक 36 मिनट का क्विज राउंड था सीजन 7 में एंड दे वर लाइक अराउंड 24 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे उसमें? क्वेश्चंस उसमें So सम आर जनरल, सो कुछ भी जेनेरिक नॉलेज का आ जाएगा, कुछ स्पेसिफिक टू हीरो, सो मे बी समथिंग दैट इज इन द न्यूज और समथिंग दैट दे करंटली वर्किंग ऑन, जो रेडिली अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे, सो दैट पार्ट माइट कम। देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स, सो इट इज बेसिक जेनरिक स्टफ, देयर इज नो एज आई मेंशन प्रेपरेशन उसमें। वो आपको इंटरनेट पे ढूंढने के मिल जाएगा, समथिंग यू माइट हैव टू सिट डाउन एंड डू सम न्यूमेरिकल्स। So it's more logistical, sorry, logical and say knowledge part that you're going to be finding on the internet search करके। उसके लिए preparation की need नहीं है, but what So you need basically is how a you need to have person all three teammates present, because time is a factor there. If you have all three people working together and solving different questions, then you are able to do it in a more timely manner. ओके तो बेसिकली हम कह सकते हैं हीरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, आप कितने अवेयर हो इस दुनिया में क्या चल रहा है, और एक हो गया आपके लॉजिकल रीजनिंग क्वालिटेटिव जो कैट में यूजुअली होते हैं। सो दीस right. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आज इन द क्विज राउंड। परफेक्ट। फिर आया हमारा पीपीटी राउंड जहाँ पे हमें एक स्लाइडर सबमिट करना होता है। उसमें Right. किस सबसे पहले आपने टॉपिक चूज की होगी, किस बेसिस पे टॉपिक सेलेक्ट किया? So there were 4 to 5 problem statements, and they were all covering a different aspect. तो एक problem statement branding से related था, core branding की, how can we as hero change our brand image, या should we change our brand image if you want to go to a different country for example। तो ऐसा statement था एक। one was related to how do we expand our business, 5 year strategy, what should we do, what is the future of mobility, things like that। तो ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमें तो बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज फॉर ऑल ऑफ देम। सो बट फॉर डिसाइडिंग कि हमें कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेनी है, वी ऑल्सो लुक्ड एट द इंजीनियरिंग ट्रैक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल इज हेडेड। So we found that sustainability was one key thing that they were looking at as an organization, जो उनके लिए काफ़ी important थी। Another thing that interested us was mobility, e-mobility, and the future of mobility. So उसमें हमें थोड़ी सी इंडस्ट्री नॉलेज थी ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे ईवीज का और उसमें थोड़ा आइडिया था, एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गॉट इंटरेस्टेड इन, and that's how we picked that up। ओह परफेक्ट। एंड सो सब कंफर्टेबल थे उस टॉपिक के साथ? अदिति सिर्फ आप ही थे? आई थिंक आप लोगों का बैकग्राउंड क्या था, सब्जेक्ट में भी सेम ही था ना, लाइक काइंड ऑफ? So, Saurav is from maths background. Abhishek Tyagi, who was our third member, um, is also an engineer, and I am also an engineer. So, Saurav was the non-engineer in our team, but he was also the ओके one who came up with the most creative solutions and very comprehensive solutions every time। या या मतलब लाइक आई एम अ नॉन इंजीनियर, लाइक आई एम अ नॉन इंजीनियर पर्सन, सो या ऑब्वियसली वी ब्रिंग क्रिएटिविटी ऑन द टेबल। या बैंग ऑन सौरव। Yeah, definitely. ओके। हाँ फिर सो तो वन पेज पीपीटी में बताया क्या था, उसमें क्या लिखा था, मतलब एक पेज की पीपीटी में क्या कितने वर्ड थे, क्या था जो आपने प्रेजेंट करा था? क्योंकि एक पेज की पीपीटी में था ना, थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, सो पीपीटी वन पेजर में मेन चैलेंज क्या आता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड लॉट ऑफ कंटेंट दैट यू वांट टू एक्चुअली पुट इनटू इट, बट इफ यू पुट टू मच इनटू इट देन इट बिकम्स टू वर्डी, जो उसको समझ भी नहीं आता, बंदे को देख के लग रहा है कि भाई क्या डाल दिया इसमें। तो उसमें बैलेंस बनाना जरूरी रहता है कि आपका जो आइडियाज है वो अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए और पीपीटी भी ज्यादा वर्डी ना लगे। दैट इज द मेन पार्ट। फर्स्टली, जब पीपीटी में आइडियाज डालने हैं, सो आपको पहले खुद को वो पीपीटी देखनी पड़ेगी आफ्टर यू मेड द पीपीटी, कि आर योर आइडियाज एक्चुअली क्लियर, कि उसमें जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो इज दैट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो आइडिया आपका कोर प्रोसेस है, कोर थॉट प्रोसेस है, वो एक्चुअली कम्युनिकेट हो रही है या नहीं हो रही।
सो आफ्टर यू पुट डाउन से 2 to 3 आइडियाज जो आपके मेन आइडियाज होंगे, जो आपको लग रहा है कि आगे सोल्यूशन बना सकते हैं इस पे, वो आप वहां पे डाल दो. पुट देम इन अ मैनर जो आगे वाले बंदे को समझ आ रहा हो. एंड उसमें फिर देन यू कैन डू सम एडिटिंग एट द लास्ट पार्ट, क्योंकि बंदे क्या करते हैं कि पहले एडिटिंग पे चले जाते हैं. फर्स्ट यू पुट डाउन द कंटेंट दैट यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जो उस पर रखना है, जो जो आपको डिलीट करना है, जो मे बी नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल और नॉट दैट यूजफुल टू समबडी हु इज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो चीज आप हटा दो. कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड देन यू गो एट द एडिटिंग पार्ट, ताकि जो प्रेजेंटेबल है वो चीज भी रखनी है, क्योंकि बंदा आगे अच्छे से उसको पढ़ेगा भी तभी जब उसको लगेगा कि हाँ जी इसमें सही चीज लग रही है मेरे को. तो वो दोनों चीजें रखनी पड़ती हैं. आइडियाज क्रिस्प होने चाहिए एंड द प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड इनफ टू लुक एट. तो वो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं. Makes sense. Aditi, you want to add something? Yeah, so just what Saurav said कि filtering out at this stage is very important. Pareto 80-20 करना पड़ता है. Where so students who are studying MBA know what Pareto or 80-20 principle is. It is basically highlighting the important 80% part of your PPT through 20% effort or through 20% of input. So that is what we try to do to create maximum impact through lesser pointers. And another aspect that Saurav said कि बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि इसमें से कौन से आइडियाज़ एक्सपैंडेबल हैं, क्योंकि फर्दर स्टेजेस में इफ़ यू क्वालिफाई आपको उसी सोल्यूशन को डिटेल आउट करना है. तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन डिटेलिंग इट आउट एट अ लेटर स्टेज, आप फंस जाओगे वहाँ पे. सो यू नीड टू बी श्योर कि आइडिया को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं एंड देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. And as Saurav said, aesthetics important hai. I have learned all my editing from him during this competition. I swear, I used to make such bad presentations. I would be the person जो रेडीमेड माइक्रोसॉफ्ट के टेम्पलेट्स यूज करती थी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एंड गूगल स्लाइड्स. बट सौरभ हैज taught me how to तो आपने make कौन it. से सॉफ्टवेयर यूज करे? कैनवा यूज किया या फिर क्या यूज किया था? No, we never या went कुछ to और ही? Canva. PowerPoint was always our go-to, पावर पॉइंट. and because we were all online, so SharePoint was our uh, favorite place to hang out. वहीं पर सब काम ओके करते थे. ओके ओके. माइक्रोसॉफ्ट इज द मोस्ट लाइक बेसिक एंड कन्वीनियंट, वहीं पे भी बहुत कुछ हो जाता है. राइट राइट. ओके. फिर उसके बाद आपने इसको सबमिट करा एंड वो सेलेक्ट हुआ. उसके बाद ये उसको फर्स्ट स्लाइडर को भी क्या प्रेजेंट करना था, उसको नहीं करना था प्रेजेंट? नहीं नहीं, वो नहीं, बस उसको शेयर प्रेजेंट नहीं करना करना था. था, वहां पे सिलेक्शन. राइट. अच्छा, वो शेयर करना था. एंड देन आया पॉइंट जहाँ पे आपको मल्टीपल आइडियाज प्रेजेंट करने थे, मतलब सॉरी एक ही आइडिया को आपको 6-7 स्लाइडर्स में सबमिट करना था. अब थोड़ा एक्सप्लेन करो, जो टॉपिक था उसको आपने कैसे क्या एक्सपैंड किया? सो एज अदिति मेंशन, हमारा टॉपिक वाज फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, और के आगे बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है. तो उस चीज़ों के लिए हमने जो पहले बेसिक आइडियाज लिए होते थे, फॉर एग्जांपल ईवी के लिए एक्सपैंड करना है, और डू वी वांट टू हैव एन ऐप, सोशल मीडिया ऐप, जहाँ पे बंदे कैन शेयर सम ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, और हैव एन ऐप वेयर the biking community can actually come into play. So different ideas that we had, that were put into the one slider. उस पे हमने थोड़ा डिटेल एनालिसिस खुद से किया. खुद से हमने देखा कि इसको कैसे 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 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट आएगा, और क्या इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजिक सेंस बनेगी उनके लिए जो करंट उनकी प्रोसेसेस चल रही हैं. तो वो तीन चीजों को हमने ले लिया था. एक आप मान लो फाइनेंशियल एनालिसिस, सेकंड वुड बी इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड वुड बी द बिजनेस सेंस. तो उन तीन चीजों को लेके हमने हर एक आइडिया के साथ देखा कि उसको कैसे मैच कर किया जाए, कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए, एंड उसके बेसिस पे ही वी eliminated some of the ideas that we had in the first PPT. जो फर्स्ट पीपीटी में हमने मान लो 5-6 आइडियाज दिए थे, उनमें से 1-2 आइडियाज हमने हटा दिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो नहीं पा रही थी, या फिर उनके करंट जो प्रोसेस चल रहे हैं उससे सेंस नहीं बन रही थी. सो आफ्टर दैट वी हैड से 3 मेन आइडियाज जिसको हमने डिटेल आउट किया. हर आइडिया का आपने कौन से, एक सेकेंड, आपने कौन से टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया था, ये बताओगे फर्स्ट स्लाइड में, जो आप बोलते डिटेल आउट नहीं हो सकते थे? राइट. सो वन आइडिया ठीक है, से मैं वाज स्पेसिफिक टू द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, कि बाइक का सम एलिमेंट जिससे सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही थी. बट दैट वाज बेसिकली वन पर्टिकुलर ट्विक इन द बाइक, जिससे लेकिन उसका बिजनेस सेंस कोई नहीं बन रहा था. दैट वाज जस्ट वन एलिमेंट कि हाँ जी सेफ्टी इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन वो चीज वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ई ट्रैक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कि हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर. तो वो एलिमेंट उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑलरेडी वो था, इंक्लूडेड था. तो उस आइडिया को, विच वाज अ गुड आइडिया बट वाजंट अ गुड बिजनेस आइडिया,
कि उसको आप कैसे एक्सपैंड करोगे, कैसे उससे पैसा बनाओगे, वो चीज हमको भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो वी रिमूव दैट आइडिया जो हमने वन स्लाइडर में डाला हुआ था, विच लुक्ड गुड ऑन द आई बट वॉजेंट रियली एक्सपेंडेबल। तो उस चीज को वहां से हमने हटा दिया था। तो आफ्टर दैट वी ओनली हैड 3 आइडियाज जिसको हम एक्चुअली उससे कुछ पैसा बना सकते थे और हैड सम बिजनेस सेंस। उन 3 आइडियाज को लेके वन वाज द ईवी दैट वी हैड, वन वाज द एप्लीकेशन दैट वी हैड, एंड वाज वन वाज रेट्रोफिटिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो 2-3 आइडियाज को हमने ले सॉरी, रेट्रो। रेट्रोफिटिंग। तो ओके, ये So आदित्य का आइडिया व्हाट्स था, दिस? मे बी शी कैन एक्सप्लेन लिटिल। I was very much pushy for this idea because I had done something similar during my engineering. So the idea was कि bikes and two-wheelers are something that are very popular in India. So more than four-wheelers, people have their two-wheelers. And as a country, as a nation, we are moving towards electrification. इफ यू वांट पीपल टू स्विच टू इलेक्ट्रिक, उनके लिए एक नई बाइक खरीदना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. एंड स्पेशली व्हेन दीज बाइक्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन द रेगुलर बाइक्स. जहां आपको एक एवरेज बाइक 40-45,000 में मिल जाती है, अ स्टार्टर इलेक्ट्रिक बाइक वुड बी समथिंग अराउंड 65-70,000. सो दैट इज एक्सपेंसिव एंड मैं नहीं स्विच करूंगी. वॉट आई कैन डू इज कि मैं अपनी पुरानी बाइक फेंके बिना आई कैन पुट इन अ किट और रेट्रोफिट इट विद अ किट, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक बाइक बन जाएगी. So instead of running on the petrol or whatever fuel it runs on, it will run on the battery and the motor that we put in the vehicle. And it's a very simple process that can be done, retrofitting, where you can convert a normal IC vehicle to a electric vehicle. So I was really pushing for this idea, but again हमारे लिए challenge इसमें था to calculate the business impact and basically measure कि कितने लोग इस idea के लिए जाएंगे, how viable is it. अगर मैं retrofit 40,000 में offer कर रही हूँ, nobody will spend 40,000 on their existing 40,000 bike कि वो उसकी life बढ़े, तो they'd rather buy a new bike. So वो viability and feasibility was something that we were looking at in the later stages of the competition. And so retrofit was one idea. Another thing that we really wanted to go ahead with was bike rentals. So with Uber and Ola, we realized कि बहुत लोग कार ओनरशिप से कैब्स पे स्विच कर गए हैं. In that instead of owning a car, it's cheaper to rent one. Have an Ola or an Uber, or just rent one for 2-3 months आप कहीं रह रहे हो तो. So we said that it might make sense for someone to rent bikes as well. Not everyone can afford renting a car. So because Hero has such a large fleet of two-wheelers, why not rent it out through their own channels? तो हमने काफ़ी इस पे रिसर्च किया, and we thought it would be a good idea. But after talking to the senior leadership, thankfully we had mentors from Hero. We got to know that Hero had recently acquired a platform that was doing this exact same thing for them, exclusively for Hero products. So that was a big savior for us, that interaction with the senior leadership, because it saved us from the embarrassment of taking that idea forward in front of leadership. ये तो हम already कर रहे हैं. So yeah, that was about the ideation phase for second round. गॉट इट। एंड उसके बाद आई थिंक तो ग्रैंड फिनल में आप सिर्फ एक ही आइडिया के साथ जाते हो, जैसे So Aditi has या गो हैड। mentioned that we had a mentor that was able to help us with the ideas and whether they're actually implementing those. So that mentor was given after the semi-final round. So before the grand finale, we had a mentor who basically went through our presentation, went through our solution, and gave some ideas and tips on how we can improve those. And he was the one who mentioned that this is something that is currently happening in Hero, so that idea might not be as useful in the final presentation. So that mentor is given after the semi-final round, before the final PPT. And there's no limit as far as number of solutions that you can present in the final PPT, but it is advisable that you don't take too many solutions, because then it feels that your mind as well is just wavering a little bit, and you're not that crisp with what you want to actually present and how it's going to impact the business in general. So I think two, or max to max would be three. More than three, you are just gone all the way. So I think it's best to keep it under three. ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। तो ये सौरभ का की टिप होता था कि हीरो के लिए एक हीरो आइडिया होना चाहिए, कि आपका हीरो आइडिया क्या है, विच इज दैट वन हाँ, banger idea that जस्ट दैट ड्राइव्स होम
everything. And उसमें बहुत डिटेल में जाके we were able to present, because if you go for multiple ideas आप डेप्थ नहीं कवर कर पाओगे. You can either go horizontally or you can go vertically and cover a lot of depth. So we tried to go more in depth of the two ideas, three ideas that we presented finally. Okay, makes sense. Makes sense. That the business mindset is coming from his side. कि हाँ एक आइडिया प्रेजेंट करो. तो फिर फाइनल राउंड में एक्चुअल में आप लोगों ने कितने आइडियाज प्रेजेंट करे? वो सेमीफाइनल में यू हैड लाइक 2-3 आइडियाज एंड ग्रैंड फिनाले तक आते आते इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मेरे को तो दो ही आइडियाज याद आ रहे हैं जो हमने एक्चुअली प्रेजेंट किए थे. I think there might have been a third one. I remember retrofit one and the app for the biking community. I'm not sure if there was a third ओके. one, Aditi, if you remember. नहीं, focus was on these two only. So यही था main ideas. So retrofit was the one that we discussed right now. We went into depth and gave them very clear market sizing. So TAM, SAM, SOM analysis एक होता है which. Yeah, so can you explain TAM, SAM, SOM, whatever you have said, Aditi? Yeah, so TAM stands for the total addressable market, which is your, so think of it like a funnel. Your market or your customers come through a funnel. So the biggest part of the funnel is the TAM, which is the total addressable market, who are the potential people who can be interested in your product. उसके बाद as you go down the funnel there is SAM, which is serviceable addressable market. This is the part of the market जहाँ पे आप actually अपना product पहुँचा सकते हो और you can service this market. And then you go down to SOM, which is the serviceable obtainable market, which is the market share that you can get out of this total funnel. And these are the customers that can actually come to you. So this is a funnel that you present to understand कितने customers होंगे, what would their demographic be like. तो वो बाद में हम describe करते हैं after coming to a number, that how many people would be there, what demographic would they belong to, what would be their age group, what would be their income level. So ये सब market factors decide करके we tried to give them a number as to how many people we feel would go for this retrofit option. We also tried to work out the financials of the retrofitting itself, कि how much would it cost to the company and how much would the service cost to the customer, and उससे what is the expected revenue that Hero can get by running this service. For the second idea, we looked at some international benchmarks, which I think Saurav can tell us more about. Saurav, go ahead. So there was an idea about the biking community. So what we have seen is a lot of bikers, men and women both in the present times, are looking at more experiential rides. So what we have seen is there's a big community that rides just for the experience, just to have a fun time with the group of members that they're actually living with. And this generally happens, say, on weekends that they will go on a ride to, say, Jammu, or have more a scenic view. So the scenic part of it was the most important part, which, say, if you want to go to from Delhi to Agra, and you put on your Google Maps, if you're in Delhi, you enter Agra, you'll get a direction which is the shortest route. But our idea was not to get the shortest route, but to get the most scenic route. So that is the element where the current biking community, which has an idea of what are these routes, because they have been, going on these routes and on these rides for a long, long time. But that information is present only to the short members that are currently present in that community. We wanted to have that information for the community in general. So we wanted to build a platform where the current community might join, share their experiences, share their rides, share the routes that they're actually taking from one place to another. And that information, once it gets to the broader public, that will be helpful to them when they're going to, say, go to a different location and want to have that experience and want to take a scenic route. Once that element is shared and it gets expanded as far as more number of people joining is concerned, then the database itself would keep on expanding. So once we have that larger chunk on that platform, and it's free of cost to the customer itself, so there's nothing that the customer is investing, but what they are getting out of the platform is a lot of information about the scenic routes that they actually enjoy.
So that was the idea behind the application. So we looked at some international players that were actually doing this itself, how the processing behind that was, how they were actually, adding those locations to the application. So we looked at behind the technical aspects of it, and then how the financial aspect of it, how onboarding of people, how the marketing of it was going to be handled. That aspect was looked at as well. And finally, it was, how the financial ramifications of it is, how is Hero going to actually make some money out of the application, or initially are they going to be looking at building the community, and then in the later phase, how they're going to utilize that platform to either generate some samples or some sampling for the products, get some testers for their products, or maybe sell some spare parts on the product on the platform. So like fancy helmets or gloves, stuff like that, the which the high end biker, because the riders are going to be the high end community that are going to be spending a lot on bikes. So that was the element that we try to cover in this application, to have the experiential part covered of it. मेक सेंस। आई रियली लाइक द आइडिया एंड मैं खुद ही इम्प्रेस्ड हुई इस आइडिया से, कब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई यू वन दिस कंपटीशन। ऑब्वियसली along with it this scenic beauty it reminded of one thing I always wanted, कोई एक ऐसा ऐप हो जो आपको उस जगह के लोकल खाने के बारे में बताए। लाइक यू डोंट नो, लाइक दिस लोकल एक गली के अंदर कोई नुक्कड़ में दिस समथिंग दैट इज वेरी फेमस बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट मोस्टली। So सो actually, अगर आप कहीं जाते तो वहीं से हम्म। बिल्ड किया था हमने। हमने थोड़ा सा वहीं ओके। से बिल्ड किया था। सो इफ यू नो अच्छा। अबाउट मिशलिन द टायर कंपनी, बेसिकली यू गेट दिस chefs get this Michelin star rating, which is very well acclaimed, and people say, oh, it's a 2 Michelin star restaurant, so ओह। हमें जाना चाहिए यहाँ पे। So Michelin tires actually came up with this concept where they said that people go out on drives to eat food. So if we as a company, as a tire company, recommend places to people to eat food, they might go out on drives more often, and thereby it'll increase our sales of tires because they will use their cars more. So that is how they started it out, and they started giving star rating to eating joints. अब आप अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो टायर कंपनी हैज नो बिजनेस गेटिंग इनटू फूड क्रिटिक्स का काम, but that is what they did, and that is what I think is the biggest, most famous thing for Michelin now. Their stars instead of their tires. So originated inspiration was that, but we didn't want to copy it. Then we also saw a lot of ads. You see these biking communities that Delhi to Leh via some places, because their objective is to go through the most scenic routes. They won't open Google Maps because they know that that will not take you through the prettiest routes. विच इज समथिंग वी रियलाइज कि एक नीड है ये मार्केट में जो अभी मीट नहीं हो रही है, या फॉर्मली मीट नहीं कर रहा है कोई प्लेटफॉर्म। सो दिस वी थॉट सैट रियली वेल विद हीरो का ब्रांड ऑल्सो, एज अ ब्रांड दैट प्रमोट्स द हमें हीरो वाइब विद whole traveling in packs as a, so that we felt was a good fit, so we went ahead with this idea. Yeah, I really like your ideas and all. I hope कभी ऐसा implement हो कुछ आपके ideas. Yeah, so thank you so much. Thank you, Aditi. Thank you, Saurav, for your time. Any last thoughts that you want to share with our audience? One thing I would say, that any competition that you're going to be part of, be it in a B school, be it in your engineering school, there's just two things that you need to keep in mind. One is your team. You have to build that as diligently as you can, because if you do not have a good members with you who are going to be supporting you, who are going to be able to help you with your ideation or any part of the process along the way. So having the right teammates, I think that is the most important part. Secondly, there will be a lot of competitions that are going to be going through. You might win some, you might not win some. The most important part is to keep trying, because Aditi might tell you, I'm telling you, we have tried hundreds of competitions, and getting success in one, two, or three of them, that is the most important part. If you get success in one, that is enough, because uh, for me, I think I've tried hundreds, 200 of competitions in my 2 years in B school. I win about 5 to 6 of them, but those were more than enough for me. But trying those 200, that is the crucial part, because if you give up after say 10 competitions or 15 competitions because you feel that you're not doing that well, or you're not that lucky, or somebody else who has say a lower or a lesser solution is actually going through, that might happen. But it's upon you and your part to keep trying each and after every competition. I mean, that's
crazy 200 competitions. I mean, like it's difficult to digest for anyone. So Aditi, any thoughts from your side when you will say go and participate in 200 competitions, or I think you have done it. I'm You've not also done I'm not as determined as it. her. He was literally one of the very few people in second year who still, never lost the spark to participate in competitions. He was always looking to learn new things. So I say this to everyone ki even if you don't win, you learn so much during the research phase for any competition that it more or less rewards you in a way. So, yeah, definitely participate and learn a lot. And I mean, the kind of interaction you get with these mentors, it's amazing. We were interacting with the EV head of Hero in our mentorship session. So, that is something crazy. And yeah, it's a great experience. Keep learning from your mistakes from past competitions. And yeah, try to give original and scalable ideas. That is it. Perfect, makes sense, yeah. So overall, take part, you will learn, हारो जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काफी पता चल जाता है, तो कभी इंटरव्यू में बैठोगे तो आप काफी कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको काफी कुछ पता होगा कि कॉर्पोरेट लेवल पे चीजें कैसे होती है, दैट्स द मेन एडवांटेज. सो यार थैंक यू सो मच एंड टू द ऑडियंस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट. Wow, they really inspired me to the best version of myself. And I'm sure आपको भी बहुत motivated feel हुआ होगा, क्योंकि right mindset, hard work और एक strategic approach से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, अब चाहे वो हीरो कैंपस चैलेंज ही क्यों ना हो. और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक भी बता देना ताकि हम आपको और अच्छे से एजुकेट कर पाएं. So thank you so much and see you in the next episode. Until then, keep growing.